Yes. Okay. Good evening once again. So let us continue the MCQs from ray optics. I think last 4-5 MCQs शायद बचे हुए थे हमारे, तो वही हम आज के लेक्चर में कंटिन्यू कर देंगे, so that this chapter will just get finished in this lecture. Okay. So let us see the screen. Yes, this is the last question we have done last time. It is the 15th question here. Okay, let us go to the question bank. No, 15th तो बहुत पहले हो गया था शायद ना. हाँ, ये भी किए थे हमने ऑलरेडी. यस, ये भी दिस वाज आल्सो फिनिश्ड. 20 भी हो गया था ऑलरेडी. Yes, I think 21st was to be done. Yes, let us do it. Question number 21. Okay, let us take it on the board. Yes. Okay, so in compound microscope, the magnifying power is 95 and distance of object from objective is given to be 1/3.8 centimeter. The focal length of objective is 1/4 centimeter. What is the magnification of eyepiece? Okay, magnification is to be found out. Okay, once again, we can just draw the diagram of compound microscope here. So this is suppose the compound microscope. ये axis है. समझो यहाँ पे objective है. ये suppose eyepiece है. और magnifying power. Okay, compound microscope magnifying power is 95. मतलब इस पूरे compound microscope का overall magnifying power दिया हुआ है. So MP of compound microscope is 95, which is actually the product of, we know that the magnifying power of compound microscope is going to be the product of magnification produced by objective multiplied by magnifying power of eyepiece, right? ये होता है. ठीक है, तो अभी इसमें मैग्नीफाइंग पावर ओवरऑल तो दिया हुआ है. अगर ये मिल जाए तो हमको ये आराम से मिल सकता है. ठीक है, तो उसमें से भी तो उन्होंने क्या दिया हुआ देखो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इज ऑलरेडी गिवन. दैट मींस दिस इज एक्चुअली यू ओ. ओके, ये अगर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे तो उसका जो डिस्टेंस है तो उसको हम यू ओ बोलते हैं, जो कि दिया हुआ है ऑलरेडी. यू इज गिवन टू बी माइनस ऑफ 1/3.8 सेंटीमीटर. ठीक है, it is negative just because it is on the left. Okay, and the focal length of objective is already given to be 1/4 centimeter. Yes, that means we can just get this FO here. Objective का जो focal length है तो वो भी हमको दिया हुआ है already. FO we can just say it will be 1/4 centimeter. And since both of them are given in centimeter, you are not to worry about the units. We can directly use the equation, length equation here, which tells us simply that 1/VO minus 1/UO is going to be equal to 1/FO. करेक्ट है. तो अगर ये हम यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा 1/VO, which is to be found out, minus 1/UO, where UO is going to be this 1/3.8, minus 1/3.8 in fact. So if we just put this here, then we can get this minus 1/3.8 kept as it is in the denominator here, which is going to be equal to 1/FO, where FO is actually 1/4 centimeter. So this 1/4 is again put here as it is. Okay, and then we can just try to find this out, VO here. So VO निकालने के लिए ये सिंप्लीफाई करेंगे इसको आगे तो हमको मिलेगा 1/, sorry, this minus of minus will become plus. Okay,
and here my 1 upon 3.8 मतलब वो ऊपर जाके simply 3.8 बचेगा, right? And that is going to be equal to 1 upon 4, which becomes 4 only. And hence in the next step we can just have this as 1 upon v is equal to 4 minus 3.8. ओके, ये 3.8 को हम उस साइड में डाल देते हैं जिससे वो नेगेटिव हो जाएगा. So 1 upon VO happens to be actually 0.2 here in this case, right? So that we can just get this VO to be simply equal to 1 upon 0.2, which is actually going to be 5 centimeter. Okay, 5 centimeter. This is going to be VO here. Once we get VO, we can find out MO easily. MO मतलब क्या होता है? Magnification of objective, which is actually going to be VO upon UO, right है? तो ये VO upon UO अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो VO तो हमारे पास ऑलरेडी है 5 और UO भी ऑलरेडी दिया हुआ है minus 1 upon 3.8. Okay, so it will be 1 upon 3.8 and इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो हमको यहाँ पे 5 into 3.8 तो मतलब वो कितना बन जाएगा एक्चुअली, तो 19 बन जाएगा, 19. ओके, so it will become 19 in this way. 19 is actually going to be the magnification produced by the objective, which can be put here. Okay, and already M is given, so ME can be easily obtained here. So here it is 95, जो कि ओवरऑल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये है मैग्नीफाइंग पावर है, और उस तरफ MO जो है वो MO हमारे पास ऑलरेडी अभी मिला हुआ है 19 एक्चुअली, and that is multiplied by magnification of eyepiece. So this ME can be obtained to be simply 95 upon 19, which is actually going to be 5. Okay, which is already there in the option number A here. Okay. Yes, very good, Arthur. Very good, Kashish. Okay, let us see the next question. Question number 22 here. Yes, let's read the question carefully. For an optical arrangement as shown in the figure, find the position and the nature of images. Okay, so here, if you just take this portion, ठीक है, ये जो पोर्शन है तो वो थोड़ा हम बड़ा करके लिखेंगे तो उससे हमको पता चलेगा कि यहाँ पे ये जो UE है, दिस इज अ कर्व सरफेस एक्चुअली, राइट? ये यहाँ पे एक कर्व सरफेस दिख रहा है आपको. ओके, तो सिंगल कर्व सरफेस होने से यहाँ पे हमको सिंगल कर्व सरफेस का फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट 1 सेंटीमीटर दे रखा है और उसका जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ पे सेंटर जो है, सेंटर यहाँ पे है, और म्यू इक्वल टू 1 मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर हियर. ओके, एंड म्यू इज इक्वल टू 1.33 मतलब दूसरा जो है साइड वहाँ पे 1.33 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम है, और सेंटर जो है वो 20 सेंटीमीटर दूर है यहाँ से, मतलब वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया. ठीक है, इसको हम R बोल सकते हैं बिल्कुल. और अभी यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हमारा, जो कि द रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस का जो बनता है μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U is equal to μ2 minus μ1 अपॉन R. नो डाउट μ2 या μ1 के बदले तुम N2 या N1 भी यूज कर सकते हो, जैसे कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है. इट डजंट मैटर. ओके, सो हियर इट इज गोइंग टू बी μ2 अपॉन V. सो μ2 कितना है, इमेज कहाँ पे फॉर्म होने वाला है, तो इस मीडियम के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 दिया हुआ है. ओके, सो देयरफॉर वी कैन जस्ट गेट इट एज 1.33 replaced here. Yes, and V to be found out minus μ1. μ1 means the refractive index of the
medium in which object is placed, where object is placed in air. So therefore, mu1 will be replaced by 1 here in this case. And u is the object distance, which is actually 40 centimeter. But again, it is going to be negative because it is at the left side of the pole. This is the origin. Okay, ये pole मतलब origin है. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा -20, replace कर दिया इधर, and that is going to be equal to mu2 minus mu1, which is 1.33 minus 1 only. But again, here we have to apply the sign convention for this r also. R means radius of curvature, which is at the left side. So therefore, this 20 has to be taken as negative. So therefore, we have to take it as -20 here. So यहाँ पे हमने -20 डाल दिया. Okay. और फिर अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1.33 upon v minus of minus plus, here it is 1/20, which is going to be equal to, here it is 0.33 upon 20. Okay. Yes, and then we can just transfer this 1/20 in that side, so that we get this as 1.33 upon v is equal to 0.33 upon 20 minus 1/20. So since the denominators are same, we can just subtract the numerators on the right side, so that we can be left with, अभी यहाँ पे 0.33 minus 1 मतलब कितना बनता है? It will be minus of 0.67, right? So this is 0.67 upon 20, which is kept as it is. And in order to get this v here, we can just take reciprocal on both sides, so that we get this v upon 1.33, which is must be equal to 20 upon 0.67. So in the next step, we can just transfer this 1.33 in that side, so that we can just get this v is equal to minus 20 upon 0.67 multiplied by 1.33. Yes, we can just do this also manually, but just remember that this 1.33 can always be written as 4/3 actually, and this 0.67 can always be written as 2/3. Okay, अगर ये बात याद रखते हो तो यहाँ पे हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं आराम से, तो सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो जाएगा बस, बाकी कुछ नहीं. तो यहाँ पे आएगा minus of 20 upon 0.67, which can be written as 2/3 here, and 1.33, which can be written as 4/3 here. And then we can just simplify this further and get this minus 20 into 2/3 का reciprocal, जो कि 3/2 यहाँ पे बन जाएगा, and that is multiplied with 4/3, which is kept as it is, so that this 3 actually just gets cancelled, and this 2 also just get cancelled with this 20, leaving behind 10, and this 10 multiplied by 40 actually comes out to be 10 multiplied by 4 actually comes out to be 40, but that is negative. What does it mean? That the image is found at the same side, means left side. So actually ये माइनस यहाँ पे आएगा, ये इस माइनस साइन की वजह से, ये स्टेप में माइनस साइन यहाँ पे हमने छोड़ दिया था एक्चुअली, जिसकी वजह से ही वो प्रॉब्लम हुआ. ये अभी ये 1/40 जो है वो जब उस तरफ जाएगा तो इट विल बिकम -1/40, and hence in the next step we can just have it as 1.33 upon v, which is equal to, यहाँ पे अगर हमने एलसीएम निकालने के लिए 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा 0.66, that is divided by 40, that is also negative. Okay, तो ये माइनस साइन यहाँ पे आएगा, -1/40, which is kept as it is, so that we can just add the numerators taking 40 common in the denominator. So ये 40 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे 1 और 0.66 ऐड होके ये 1.66 बन गया एक्चुअली, और वो भी नेगेटिव. Yes, so if you just take reciprocal on both sides, then it will be actually v upon 1.33, which is going to be 40 minus 40 upon 1.66. Okay, and 1.33 can be written as 1 plus 1/3, मतलब 4/3 actually,
and 1.66 can actually be written as 5/3. ओके, इसको अगर हमने 5/3 लिख दिया और यहाँ पे अगर डाल दिया तो हमको मिलेगा v अपॉन 4/3 is equal to -40 अपॉन 5/3. यस, तो दोनों तरफ से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, and transferring this 4 in that side, we'll just obtain it as v is equal to -40 into 4 upon 5, correct? And then we can be able to get this as 160 divided by 5, मतलब -32 centimeter. हाँ, अभी आ रहा है correct है. Okay, so v will be 32, and if we just use this here, then we can be able to get this as 32 upon u. u कितना है? 40 है, which must be equal to h2, which is to be found out, upon h1, which is given to be 1 only. So इससे हमको h2 का वैल्यू कितना मिल रहा है? तो ये 40 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 10 जा एंड 4 8 जा, तो 8/10 मतलब 0.8 हो जाएगा वो. So that means we can just obtain this h2, मतलब इमेज का जो साइज है वो कितना हमको मिलने वाला है? 0.8 सेंटीमीटर मिलने वाला है. So h2 comes out to be 0.8 centimeter. Yes, and its location will be at 32 centimeter, no doubt. So this is the A is going to be actually the correct option. भले उन्होंने वहाँ पे पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज बोला है, तो पोजीशन तो हमको मिल गया यहाँ पे जो कि 32 सेंटीमीटर है, बाकी उसका नेचर भी हमने निकाल लिया. इट इज एट द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, मतलब यहाँ पे 32 सेंटीमीटर पे, मतलब यहाँ पे किधर तो भी होगा वो. Very easy actually. Focal length of objective and eyepiece of a microscope are 1 and 5 centimeter respectively. Okay, so FO is given to be 1 and FE is actually given to be 5 in centimeters. Okay, if magnifying power of the for relaxed eye is 45. Okay, देखो ठीक से magnifying power of that compound microscope is going to be 45, and that is for relaxed eye, means V must be infinity here. Eyes are most relaxed when image is formed at infinity. We want to find out the length of length of this tube here. Okay, तो ट्यूब का लेंथ हमको कैसे मिलेगा? देखो, if we just get the same diagram. Okay, so the same diagram we have just drawn here, and now if the final image is formed at infinity, अगर final image infinity पे form होता है तो यहाँ पे उसका जो ऑब्जेक्ट जो है तो वो यहाँ पे जरूर फोकस पे होना जरूरी है. तो यहाँ पे UE जो है वो UE और FE सेम ही होना चाहिए. यहाँ पे UE will be same as FE only. Okay, because object must be at focus so that the image will be formed at infinity like this. Okay, तो उसके लिए इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे फोकस पे होना जरूरी है, और उसके लिए यहाँ पे UE और FE को सेम बनना पड़ेगा. और अगर ऐसा है तो फिर उस केस में ये जो डिस्टेंस है वो तो VO ही रहने वाला है, VO. तो इसकी वजह से लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप विल एक्चुअली बिकम VO प्लस FE. एक्चुअली FE तो ऑलरेडी दिया हुआ है, just we have to find out this VO here. So how can we get this VO is, yes, so VO के लिए फोकल लेंथ दोनों के दिए हुए हैं. If magnifying power for relaxed eye is 45. Okay, okay, so magnifying power of compound microscope होता कितना है? It is equal to the product of magnification of objective and the magnifying power of eyepiece, right? So eyepiece का magnifying power, how much it must be? It should be D upon UE, मतलब FE, क्योंकि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, राइट? तो ये और MO जो है वो हमको पता नहीं,
बट MP दिया हुआ है, ओवरऑल मैग्नीफाइंग पावर दिया हुआ है. So just let us put this overall magnifying power 45 as this one here. 45 is equal to MO, we don't know, and D is already 25, we know that it is already, and FE is already given here, which is 5 in this way. So if we put all these values, then we can be able to get that 45 must actually be equal to MO into 9, right? MO into 9. But if we just transfer this 9 in the denominator, then we can be able to get this MO is equal to 5 actually. So अगर MO मिल गया और FO भी हमको पता है, but UO पता नहीं है here. So it will be 1 upon VO minus 1 upon UO is equal to 1 upon FO, where अब यहाँ पे जो VO जो फॉर्म होने वाला है, यहाँ पे ये जो है, ये इसका इमेज है बराबर. तो दिस विल बी VO एक्चुअली, एंड इट विल बी अपोजिट इन साइन विथ UO हियर. UO और VO जो है वो अपोजिट साइन से होंगे, साइन के होंगे. तो इसलिए यहाँ पे अगर हम UO को कंसिडर करते हैं, ठीक है, VO हमको निकालना है, तो VO जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, करेक्ट है. तो इसलिए इसमें से हम बोल सकते हैं कि UO विल बी एक्चुअली VO by 5, and that will also be negative actually, just because VO is going to be positive and UO is going to be negative. So therefore UO will be actually minus of VO by 5. So अगर ये बातें हम यहाँ पे रख देंगे तो हमको ये मिलेगा 1 upon VO minus 1 upon UO के बदले ये पूरा डाल देंगे जो कि minus VO upon 5 है. So this is minus VO upon 5, which is going to be equal to 1 upon FO, where FO is already given to be 1 centimeter here. So we can just put it here, and then we can just try to solve. So it will be 1 upon VO, then plus ये 5 ऊपर चला जाएगा और हमको मिलेगा 5 by VO, which is going to be 1 exactly. So that we can get this 1 plus 5 मतलब 6 upon VO is going to be 1, means VO must be actually 1 by 6, right? So this is the value of VO here. So once we get it, we can just use the formula for this length of the telescope. So length of the telescope will actually be, sorry, microscope will be 1 by 6 plus FE, which is 5. Yes, actually here it should be 5 and here it should be 9 actually. तो यहाँ पे 5 आएगा और this should be 9. So it should be, magnification will be 9 actually. So UO will be minus VO upon 9. So that we can just get this minus VO upon 9 replaced here. So that in the next step it will become 9 by VO. And 1 plus 9 by VO becomes actually 10 by VO, which means it will be 10 actually. Yes. If we cross multiply it here, then we can just get that VO will be equal to 10 centimeter directly. तो ये VO मिल गया हमको 10, और FE जो है वो ऑलरेडी 5 है. तो ये अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं तो 10 plus 5 मतलब हमको ये मिल जाएगा 15 centimeter, which will actually be the length of the tube here in this way. Okay, let us see the next question. A thin equiconvex lens of refractive index 3/2 and radius of curvature 30 is put in water. When the refractive index of water is 4/3, then its focal length in water will be. Okay, so ये हमको already
सिचुएशन जो है वो हमको ऑलरेडी पता है. लेंस इक्वेशन, मिरर लेंस मेकर्स इक्वेशन क्या कहता है? 1 upon f is going to be mu minus 1 into 1 upon r1 plus 1 upon r2. Okay, but if suppose the same is just put in water or any another medium, then in this case 1 upon fm we can say will actually be, यहाँ पे ये म्यू के बदले क्या आ जाएगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं. अब यहाँ पे चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रहेगा, but here it will be the refractive index of glass with respect to water, means it will be mu g upon mu w actually, right? And then minus 1, and here then it will be 1 upon r1 plus 1 upon r2. जिन दोनों को डिवाइड करने से हमको मिलेगा, ये देखो इस इक्वेशन नंबर 1 देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, और इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा fm upon f is going to be equal to mu g minus 1 in the numerator upon, here it is going to be mu g upon mu w minus 1 in the denominator. Okay, so that we can just put the values fm upon f. f मतलब क्या है? हाँ, तो f भी हमको पता नहीं है, ठीक है, वो f हमको निकालना पड़ेगा पहले, तो उसके लिए यही फॉर्मूला हमको यूज करना होगा. ठीक है, उससे हम पहले f निकाल के लेंगे और उसके बाद ये वाला रिलेशनशिप यूज करेंगे. चलो पहले एफ एम और एफ के बीच में रिलेशनशिप तो डिराइव करके लेंगे फटाफट. तो देखो यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 3/2. ओके, सो दिस इज 3/2 kept here, 3/2 minus 1, and here it will be in the denominator 3/2 divided by 4/3, जो कि ग्लास वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये 4/3 यहाँ पे आ गया, and then minus 1 kept as it is. So here we get this fm upon f, which is going to be equal to 3/2 minus 1 means 1/2. Okay, this is 1/2 here, and here it will be 3/2 divided by 4/3, मतलब 3/2 multiplied by 3/4 comes out to be 9/8 actually. So this is 9/8 minus 1 kept as it is. So if we just solve this further, 9 minus 8 upon 8 becomes 1/8 actually. So we can just have this as 1/2 divided by 1/8, which actually becomes 8/2, मतलब वो बन गया 4, right? So fm upon f becomes actually 4. So this gives that fm is actually going to be 4 times of f. But what is f? We can just try to find out from this equation. 1 upon f is equal to mu g minus 1 into 1 upon r1 plus 1 upon r2. This is for convex lens. Okay, तो convex lens के लिए फॉर्मूला हमको मिलता है. तो ये 1 upon f जो है तो वो 3/2 minus 1 into रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है देखो, और वो 30 मीटर है, मतलब दोनों का सेम ही है, और वो वैसे भी यहाँ पे इक्वी कॉन्वेक्स बोला है, तो इसका मतलब दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम ही रहने वाला है. सो यहाँ पे आ जाएगा 1/30 plus 1/30 again, so that we can just simplify this and get this 1 upon f to be simply equal to 1/2. ये जो है 3/2 minus 1 becomes 1/2, and in the bracket we can just have this as 1/30 plus 1/30, मतलब 2/30. Okay, so this is 2/30. So these two will get cancelled, and 1 upon f is equal to 1 upon 30 gives f is equal to, sorry, f is equal to 30 simply. So f becomes equal to 30 centimeter. Once you get this f, we can just get fm also. So fm will actually be equal to 4 times of 30, मतलब वो बन गया, yes, 120 centimeter. 120 centimeter मतलब ही वो 1.2 मीटर के बराबर आएगा. So this D will be actually the correct option. Yes, very good, Arthur. You are correct. Chalo, next one. Okay, only one question is remaining after this. So let us see. The size of image of an object which is at infinity as formed by convex lens of focal length 30 is 2 centimeter. If a convex lens of focal length 20 centimeter is placed between the convex lens and the image at a distance of 26 centimeter from the convex lens, calculate the new size of image. Okay.
see here, this is suppose the axis, the size of image of an object which is at infinity. Okay, so object is at infinity formed by the convex lens. Suppose this is the convex lens and object is at infinity, means the rays are just parallel to each other. Of focal length 30 centimeter is 20 centimeter. ओके, तो फोकल लेंथ इसका दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो बनता है इसका साइज दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर. ओके, तो यहाँ पे सभी रेज आके कन्वर्ज हो रहे हैं. ठीक है, सो if a concave lens of focal length 20 centimeter is placed between the convex lens and image at a distance 26 centimeter from the convex lens. Okay, तो मतलब convex lens से 26 सेंटीमीटर पे, मतलब ये 26 सेंटीमीटर पे यहाँ पे हमने एक कॉन्केव लेंस रख दिया. देखो ये कॉन्केव लेंस यहाँ पे लग गया और उसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ये यहाँ पे हमने डाल दिया. ठीक है, तो अब क्या होगा एक्चुअली, देखो कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है इस कॉन्वेक्स लेंस की वजह से, तो वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली इस कॉन्केव लेंस के लिए एक इमेज और सॉरी ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा. मतलब इस कॉन्केव लेंस का जो इमेज है ये वाला, वो इस कॉन्केव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा. तो इसका मतलब अभी देखो ये डायग्राम हम थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं. Yes, suppose this is the lens and suppose we have this object formed here. Okay, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है. Okay, and this is the focus of this lens. Okay, ये वाला जो है वो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है. ठीक है, अभी यहाँ पे हम और एक कॉन्केव लेंस रखने जा रहे हैं. अच्छा, और कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है तो ये 30 सेंटीमीटर दे रखा है. This whole distance is going to be 30 centimeter, which is the focal length also and the distance of object image also. तो ये बन गया हमारा 30 सेंटीमीटर. ओके, और यहाँ पे जो कॉन्केव लेंस हम फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, it is just formed at 26 centimeter from this convex lens. तो यहाँ से उसका जो डिस्टेंस है वो 26 सेंटीमीटर है. मतलब उसका डिस्टेंस उस तरफ से कितना होगा, ऑब्जेक्ट से कितना होगा. अगर ये 26 है तो ये 30 में से उस 26 को अगर सबट्रैक्ट कर देंगे तो वो एक्चुअली 4 सेंटीमीटर बचेगा. तो ये 4 सेंटीमीटर पे वो कॉन्केव लेंस है. ठीक है, तो ये जो इमेज है ये इस कॉन्केव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा और ऑब्जेक्ट उसका यहाँ पे रखा हुआ है 4 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है. तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा वो हमको ढूंढ के निकालना है. तो इट कैन बी डन बाय यूजिंग दिस मिरर लेंस. यस, okay, so lens equation we have that for concave lens. देखो कॉन्केव लेंस के लिए अगर मिरर इक्वेशन लेंस इक्वेशन यूज करते हो तो 1/FO is equal to 1/VO minus 1/UO. Okay, focal length of concave lens is given to be 20 centimeter, but don't forget that it should be taken as minus negative. So this is minus 20 here and that is equal to 1/VO which is to be found out minus 1/UO. अभी देखो अगर कॉन्केव लेंस के लिए अगर देखते हो तो ऑब्जेक्ट इज एट द राइट साइड, so its object distance has to be taken as positive and it is 4 actually, so therefore we can just put it 4 here. तो यहाँ पे 4 डाल दिया. तो ये -1/4 को अगर हम उस तरफ लेके जाएंगे तो वो 1/4 हो जाएगा और यहाँ पे हमको मिलेगा 1/4 minus 1/20 which is going to be equal to 1/VO. V मतलब
Okay, so 1 upon V happens to be actually equal to 1 upon 4 minus 1 upon 20. Here we can just multiply this by 5 and divide also by the same 5, so that denominator will become 20. And in the numerator, 5 minus 1 comes out to be 4. So that if we reduce this, then we can get 1 upon 5 as a final. So that we get VO becomes 5 here. That means the final object, final image is going to be formed at 5 centimeter from the concave lens. And that is also positive. That means it should be at this side here. तो यहाँ पे फॉर्म होगा वो 5 सेंटीमीटर पे. अभी हमको कैलकुलेट द न्यू साइज ऑफ इमेज हमको पूछा है. ओके, तो साइज ऑफ इमेज, अभी ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, 2 सेंटीमीटर है. तो अगर हम यूज करेंगे v अपॉन u इज ऑलवेज इक्वल टू h2 अपॉन h1, तो उससे हमको मिलेगा इज गिवन टू बी 5 अपॉन u इज ऑलरेडी 4, which is going to be equal to h2, which is to be found out, upon 2, which is h1. So if we just simplify this, then 2 gets cancelled with this 4, leaving behind 2, and h2 actually comes out to be 2.5. So 2.5 centimeter will actually be the final answer. Okay, yes, option B will be the correct. Yes, Kashish. Okay. Then we can just go to the last question here. Focal length of thin biconvex lens is 20 centimeter. Okay, तो ये biconvex lens है, इसका focal length 20 centimeter है, ठीक है. When an object is moved from a distance of 20 centimeter in front of it to 50 centimeter, the magnification of its image changes from M25 to M50. Then the ratio of M25 to M50 is to be found out. Okay. तो देखो, focal length of the lens is given already. It is 20. Okay. Now, when the object is moved from a distance of 25 centimeter in front of it to 50 centimeter. Okay. मतलब ऑब्जेक्ट जो पहले 25 सेंटीमीटर पे था, ओके, उसको हमने अभी यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पे रख दिया. तो इन दोनों केसेस में जो उसका मैग्निफिकेशन बन गया, तो उसका रेशियो हमको ढूंढ के निकालना है. ओके, तो देखो एक सिंपल सी बात है कि मैग्निफिकेशन M25 कैन बी रिटन टू बी सिंपली इक्वल टू V अपॉन U, और वी कैन से V1 अपॉन U1. बट अब यहाँ पे V1 हमको निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास लेंस इक्वेशन है, तो उसको अगर यूज करेंगे तो हमको मिलेगा 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V1 माइनस 1 अपॉन U1, where 1 upon F means 20, which is going to be equal to 1 upon V1. V1 is to be found out, minus 1 upon U1. U1 is going to be minus 25 here. So if we just put it as minus 25, then we can be able to get this. ये minus 25 की वजह से ये plus 25 बन जाएगा. So we can just have this 1 upon 20 is equal to 1 upon V1 plus 1 upon 25. So that this 1 upon 25 is transferred that side, so that we get this 1 upon 20 minus 1 upon 25, which is going to be 1 upon V1, and hence we can just get this 1 upon V1 to be simply equal to, अभी इनका LCM क्या बनता है, देखो 100 बनता है. तो यहाँ पे हमको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत होगी, और यहाँ पे एक्चुअली 4 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत होगी, जिससे डिनोमिनेटर में 100 कॉमन आ जाएगा, और न्यूमरेटर में जो है 5 माइनस 4 मतलब 1 बनेगा, जिससे हमको मिल जाएगा V1 is equal to 100. Okay, so M25 can be obtained to be simply 100 upon 25. Okay, so that this M25 will be actually 4 here. In the same way, we can just do it for M50 also, but M50 will actually the ratio of V2 upon U2, where V2 can be found out by using lens equation once again. So 1 upon V2
minus 1 upon u2 is equal to 1 upon f, where 1 upon v2 is to be found out, minus 1 upon u2. u2 is already given to be 50 centimeter here. So it will be minus, okay, so minus 50, and that is going to be equal to 1 upon 20, so that 1 upon v2 becomes actually equal to 1 upon 20, and this plus 1 upon 50 goes that side, so that it becomes minus of 1 upon 50, right? And hence it becomes 1 upon v2 is equal to, यहाँ पे भी LCM 100 ही बन रहा है, तो इसको हमको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा और इसको 2 से, so that we can just get this 5 minus 2, that is 3 upon 100 as it is. So v2 actually becomes actually equal to 100 upon 3, correct? So this is v2. So if we just try to find out this m50, then it will actually be 100 upon 3 divided by u2, which is given to be 50 already. So here it is 50. That means it will be actually 2 by 3 only, right? So here 51s are 52s are, and hence it will become 2 by 3. So the ratio of m25 upon m50 will come out to be 4 divided by 2 by 3. Means it should be 4 multiplied by 3 by 2, which is actually 6 here, which is there already in the option A. Okay, yes, Acharu, you are correct. Yes, so we have finished with all these questions from this chapter, ray optics. So let us declare that this chapter has been finished up to JEE NEET level. So you can start the next chapter next time. Okay, so let us stop here. Thank you all of you.